Assalamu alaikum, dear students of class 8th. In today's session, I will discuss unit number 3, the hazards of flood. What does it mean? The hazards of floods. Hazards means the dangers. Flood कहते हैं सैलाब को, सैलाब के खतरात. Before I start today's lesson, I'm going to discuss some important SLOs of this lesson. What will you be able to do after discussing this lesson, after studying this lesson? SLO number 1, that's very important SLO is, after studying this lesson, you will be able to write a composition of 3 or more paragraphs following conventions of essay writing. What does it mean? After studying this lesson, you will be able to write a comprehension that will consist of more 2 or more than 2 paragraphs following certain rules of essay writing. That's something very important, that you will be able to write an essay, a composition. Then a very important SLO is, you will be able to analyze and compare various informal and formal dialogue to note differences of features, vocabulary, style and tone. That's very important, that you will be able to write a dialogue. What is a dialogue? Because this lesson is basically about a dialogue. How to write a dialogue. What are different features of dialogue? That's something very, very great, very important. Then very important SLO is, you will be able to use summary skills to transfer the written text to a closed paragraph. After studying this lesson, you will be able to write the summary of any lesson in a closed paragraph. That's very important. Summary skills are very important skills. You have to practice these skills. Then one more, write and revise short formal dialogues. That's very important, that you will be able to write and revise short formal dialogues. Then very important SLO is, you will be able to change the gender of nouns. That's very important. And one thing that you must keep in mind, that English is a unique language in this context. In other languages, there are just 2 genders, masculine and feminine. But here in English language, there are 4 genders. Do you know? Masculine, feminine, common and neuter. Only in English language, there are 4 genders of noun. Unlike other languages, where we have just 2, masculine and feminine, muzakkar and muannas. लेकिन यहाँ आपके पास 4 जेंडर हैं. I will discuss gender in detail in some of my other videos. Then the next one is, you will be able to distinguish fact from opinion. That's very important, that you will be able to distinguish what is the fact and what is an opinion. There is a difference between fact and opinion. So these are some very important SLO that you must keep in mind before studying this lesson. So now I will discuss some very important words. And what you are supposed to do, you have to write down all new words in your notebook. Neat notebook. आपने अपनी neat notebook में इन new words को लिखना है, that I am going to discuss now. Because new words or vocabulary, that's very important for the comprehension of the text. And without comprehension, if you just read out the lesson, if you just study the lesson, there isn't any comprehension, then everything is just futile. फिर कोई फ़ायदा नहीं है. So for comprehension, for better comprehension, meanings of difficult, whether in Urdu or English, doesn't matter. The actual thing is your comprehension, your concept. अगर आपका concept clear है, आपका comprehension level है, आपको तमाम difficult words के meanings आपको आते हैं, then it means that your concept is clear. You will be able to answer the question given at the end. You will be able to comprehend the text yourself. आपका comprehension है, then everything is okay. Actual thing is comprehension. So I will try to discuss all the difficult words, all the new words in English and Urdu as well. And you have to write down all new words in your notebook. This is your first assignment. Let's discuss the new words. Okay. Word number 1. Attentively. The first words that you will come across in line number 1, that is attentively. Attentively mean with concentration. तवज्जो के साथ, गौर से. It's easy. You have to write down, again I tell you, you have to write down all these words
विद द हेडिंग विकेबुलरी। विकेबुलरी की हेडिंग के साथ आप इस तमाम अल्फाज को लिखेंगे, और जब आपको ये तमाम लफ्ज़ आपको समझ आ गए, दैन यू कैन ट्रांसलेट, यू कैन कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट योरसेल्फ। फिर आप खुद भी टेक्स्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिवास्टेटिंग। मेरी प्रोनाउंसिएशन भी चेक करनी है। यू शुड बी एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। प्रोनाउंसिएशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. This is one main purpose of this reading, is that you should improve your pronunciation. Devastating. Devastating means destructing, having destruction. Tabakun. The next word is monsoon. Monsoon. Monsoon means a period of heavy rainfall, especially in South Asia. There is a period in a year, this is of June and July, where we have a heavy rainfall. That period is going to come. वो टाइम आने वाला है जब पाकिस्तान में, जब सावन का मौसम कहते हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. दैट पीरियड इज़ कॉल्ड मानसून पीरियड, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनफेटेड. अनफेटेड मीन अनचेक्ड, नॉट कंट्रोल, जिस पे कोई काबू नहीं पाया जाता, जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज़ चॉप. चॉप मीन्स टू कट, काटना. इट्स सिंपल. वुड चॉपर, लकड़हारा. चॉप, काटना, टू कट इनटू पीसेस. The next word is catastrophic. Catastrophe कहते हैं नागहानी मुसीबत, बला, बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी मुसीबत. तो catastrophic means ऐसी मुसीबत that cause a lot of damage. 2005, the earthquake of 2005 was a great catastrophe. बहुत बड़ी मुसीबत थी, बहुत बड़ी तबाही लाई उसने. The next word is approximately. Approximately means as a guess, अंदाज़तन, अंदाजे के तौर पर. Then usurp. Usurp means to occupy, to control, काबू में ले लेना, किसी चीज़ को शिकंजे में ले लेना, किसी चीज़ को हथिया लेना, अंडर कंट्रोल ले आना, कब्जा कर लेना. The next word is infrastructure. Infrastructure means basic structure, बुनियादी ढांचा. जिससे कोई इमारत खड़ी होती है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो कोई सिस्टम है, उसका बुनियादी जो खद ख्वाल है, बुनियादी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वल्नरेबल. आपकी बुक में जो आगे मीनिंग्स दिए हुए हैं उसमें ये लफ्ज़ वेनरेबल लिखा हुआ, दैट्स रॉन्ग. वेनरेबल का लफ्ज़ आपकी बुक में यूज़ ही नहीं हुआ. वेनरेबल का मीनिंग वहाँ पे ठीक है, रिस्पेक्टेबल, बट दैट वर्ड हैज़ नॉट बीन यूज इन योर टेक्स्ट. द एक्चुअल वर्ड इज़ वल्नरेबल. वल्नरेबल मीन्स वीक, अनप्रोटेक्टेड, जो कमज़ोर है, प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, दैट कैन बी हर्ट ईजीली. द नेक्स्ट वर्ड इज़ malnutrition. Malnutrition means bad nutrition, poor food, poor nutrition, right? Then render. Render means to leave, to give. किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को दे देना. And the last word is hazard. मैंने स्टार्ट में बताया था, वो भी लिख लें आप. Hazard means danger. I haven't noted down over here. स्टार्ट मैंने डिस्कस किया था hazard, hazards of floods. Hazard means dangers. इसको भी नोट करना है. The last word is intention. Intention means with attention, तवज्जो, गौर के साथ. Now I will discuss the whole lesson, the first 2 or 3 paragraphs, and you have to listen to me very carefully. I have discussed all the words. Now it's quite easy to comprehend the text. अब text को समझना बहुत easy है. What you are supposed to do, you will just listen to my pronunciation. I have told you already that pronunciation is very important. You have to improve your pronunciation. That is just one aim of this reading. Then you have to underline all the words that I have already discussed, the difficult words, then you have to note down in your notebook. And then after studying this lesson, I will assign you a homework. Maria was sitting in the class, listening attentively to a teacher talk about devastating floods of July 2010 and August 2013 in Pakistan. Now it's quite easy for you to understand, to comprehend, because I have discussed all the words. मारिया क्लास में बैठी थी और टीचर को सुन रही थी बड़ी तवज्जो के साथ, अटेंटिवली. टीचर क्या बात कर रही थी? टीचर जुलाई 2010 और अगस्त 2013 के पाकिस्तान में जो तबाहकुन सैलाब आए थे उनके बारे में बात कर रही थी. Got it? The teacher was highlighting the possible causes of flood and held monsoon rain to be the chief cause of devastating floods of 2010. Teacher was highlighting, टीचर रोशनी डाल रही थी किस पे? The possible causes of floods, फ्लड की जो मुमकिन वजूहात हैं, and held monsoon rains,
to be the chief cause of devastating flood of 2010. और टीचर साहिबा ने 2010 के जो तबाहकुन फ्लड्स था उसकी बड़ी वजह चीफ काज मानसून की बारिशों को ठहराया। मानसून की बारिशों की वजह से 2010 के तबाहकुन सैलाब आए थे। She explained that floods occur when heavy rainfall lead to the unfettered flow of large quantities of water that the soil is unable to absorb. She explained, टीचर ने वजाहत की, floods occur, सैलाब आते हैं, सैलाब रुनुमा होते हैं कब? When heavy rainfall leads to unfettered flow of large quantities of water. जब बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से बड़ी तादाद में अनफेटेड फ्लो, बेकाबू जो पानी का बहाव है वो पैदा होता है। देयर द सॉइल इज़ अनएबल टू एब्जॉर्ब, जिसको ज़मीन जज़ब करने में नाकाम हो जाती है। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से बेकाबू पानी की बड़ी मकदार का पानी का बहाव जो है वो आ जाता है बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, और ज़मीन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जज़ब नहीं कर सकती। दैट इज़ द मेन रीज़न। The soil loses its ability to absorb water, particularly in areas where people have chopped down trees without planting new ones. ज़मीन की जो पानी को जज़ब करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ख़ास तौर पर particularly नहीं है, the exact pronunciation of this word is particularly in areas, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में where people have chopped down trees, जहाँ लोग दरख्तों को बेरहमी से काटते हैं, दरख्तों को काटते हैं विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, नए दरख्त उगाए बगैर पुराने दरख्तों को लोग काट देते हैं। ऐसे इलाकों में ज़मीन की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर दैट इज़ फिनिश, ख़त्म हो जाती है। द टीचर फर्दर एडेड द नेचुरल हैज़र्ड्स कैन बी कैटास्ट्रॉफिक। टीचर ने मज़ीद कहा ये जो कुदरती ख़तरात हैं ये बड़े तबाहकुन हो सकते हैं। दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज फॉर द कम्युनिटीज़ दैट फॉल विक्टिम टू देम, ऐसे माशरों के लिए जो इनका शिकार होते हैं। इन अ रिफ्लेक्टिव मैनर, बड़ी सोच प्रचार वाले अंदाज में, ही डिक्लेयर्ड 2010 फ्लड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर इट अफेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल। ही डिक्लेयर्ड 2010 फ्लड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर मीन तबाही, ये भी आप नोट कर लें। उन्होंने 2010 के जो ज़लज़ला है, जो सैलाब हैं, उन्हें पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन तबाही करार दिया। क्यों? फॉर इट अफेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल, इसलिए कि इन सैलाब ने 20 मिलियन लोगों को, अंदाज़तन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन लोगों को मुतासर किया। द फ्लड ने क्या किया? द फ्लड डिस्टर्ब्ड होम्स, क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लेम्ड अबाउट 2000 लाइव्स। फ्लड्स ने घरों को अपनी लपेट में ले लिया, काबू कर लिया, यूज़र्व्ड, काबू कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना, फसलों को अपनी लपेट में ले लिया, और बुनियादी ढांचा, जो भी बुनियादी ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, किसी चीज़ की बेस थी, उन सबको ख़त्म कर दिया। एंड क्लेम्ड अबाउट 2000 लाइव्स, और 2000 जिंदगियाँ भी निकल लीं। Millions of the people became vulnerable to malnutrition and waterborne diseases, and approximately 1.6 million people were rendered homeless. Millions of the people became vulnerable. लाखों लोग अनप्रोटेक्टेड हो गए, ओपन हो गए, एक्सपोज हो गए, किस चीज़ की? मेल न्यूट्रिशन की, बुरी ग़िज़ा। लाखों लोगों को बुरी ग़िज़ा मिली, वो गैर महफूज हो गए बुरी ग़िज़ा के लिए। एंड वाटरबॉर्न डिजीज़, और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए भी गैर महफूज हो गए, उनको ये बीमारियां भी लगीं। और अंदाज़तन 1.6 मिलियन पीपल वर रेंडेड होमलेस, 1.6 मिलियन लोग, 16 लाख लोग वो बेघर हो गए, बेयार मददगार हो गए, उनको बेघर छोड़ दिया गया। लिस्टिंग इंटेंटली, बड़ी तवज्जो से सुनते हुए, मैनी क्वेश्चन फॉर्म्ड इन मारिया's माइंड, मारिया के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए। She raised her hand to get the teacher's attention. उसने टीचर की तवज्जो हासिल करने के लिए हाथ खड़ा किया। That you normally do whenever you want to ask a question, just raise your hand. इन आप रूटीन है ना, आप हाथ खड़ा करते हैं। So this is all about first 2 or 3 paragraphs, and this lesson is about, or these paragraphs are about the whole lesson. अब what you are supposed to do, आपका काम क्या है? First of all, you will write down all the difficult words
in your notebook. Then you will read out this lesson, the first part of this lesson. You will try to comprehend yourself with the help of those difficult words, with vocabulary. Then the next home task is you will write a summary, the central idea of the lesson, because these 2 or 3 paragraphs carry the central idea of the lesson. आपने अपने अल्फाज में ये जो हमने आज स्टडी किया है, लेसन पढ़ा है, उसका पार्ट पढ़ा है, इसमें पूरे लेसन का आइडिया है. आगे जो डायलॉग है दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. आपने अपने अल्फाज में इस लेसन का सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द लेसन लिखना है, व्हाट दिस लेसन इज अबाउट. इन दिस लेसन द राइटर डिस्कसेस दिस और दैट. वट एवर यू हैव फाउंड, यू हैव कॉम्प्रिहेंडेड, आपको समझ आ गई है कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लिए, आपने सारा जो लेसन है उसका कॉम्प्रिहेंशन देख लिया. अब आपने खुद अपने अल्फाज में 5 या 6 लाइन्स में यू हैव टू राइट डाउन the whole summary, the central idea, the theme of the lesson. So that's all for today. In the next session, we will discuss the next part of the lesson. That's a dialogue. That's all for today. Thank you very much.